So today I am here at Purva Aspire. Now this project is located in Baudhan. Matlab यहाँ से Ambrosia is just about 10 minutes and also the Oracle IT Park is in very close vicinity. Along with that, the Bombay-Bangalore highway is also just about 10 minutes. So the Chandni Chowk road leads us right over here from a bypass. Isn't all of this just amazing? Well, wait for it, because this project has multiple ultra luxurious amenities. Like, the best part that I liked about it is the oxygenated clubhouse. Now, what exactly is an oxygenated clubhouse? This clubhouse will have much more oxygen than the normal air outside, because they have put up purification air systems inside the clubhouse. Along with that, they also have their own water treatment plant, because of which you will always get tap water over here. होम ऑटोमेशन, सोलर पैनल्स जो कि लगे हुए हैं आपके घर के ऊपर, तो होम ऑटोमेशन से आपको मिल जाएगा घर जो कि होगा ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक, एक्सेसिबल बाय योर फोन फ्रॉम एनीवेयर. एंड along with that, the solar panels that are placed on the roof of the building is not only going to give you only the lift power backup but also power inside your master bedroom for the light and the fan. Now the whole project is located in a land parcel of approximately 2.5 acres, and there are going to be only 2 towers with multiple amenities like swimming pool, gymnasium, outdoor club area and a lot more. But there are going to be only 2 and 3 BHK apartments over here. So if you are looking for a property in Baudhan, Purva Aspire is the place to be. Why am I saying this? Well, wait until you see the sample flat. Follow me. Now this behind me is the 2 BHK apartment, जो कि है 828 square feet का, but actually it is 1140 square feet. Wait, did I just confuse you? Okay, I'm going to solve that confusion for you. But for that, you will have to stay with me until the end of the video so that I can explain you why is it 828 square feet but still 1140 square feet. Come with me inside so that I can show you how beautiful this house is. Right over here, we enter into the house and no direct access to your living room, because you get this wall over here and this wall over here. So बहुत सारे घरों में ये होता है that हमें यहाँ पे सीधे एक वॉल मिलती है और लिविंग रूम को एक्सेस नहीं मिलता है, बट यहाँ पे कंप्लीट प्राइवेसी दी हुई है. और ये जो स्पेस है इसे आप यूज कर सकते हैं शू रैक्स के लिए. प्राइवेसी की बात करें तो सिक्योरिटी मिस आउट नहीं करेंगे. ऑटोमेटेड लॉक, यहाँ पे आपको डिजिटल लॉक मिल जाएगा. आइए घर के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ लिविंग और डाइनिंग एरिया भी. Now this is your living space over here that comes with a really big window and also a balcony, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे. पहले लिविंग, डाइनिंग और किचन तो देख लीजिए. आइए, इस लिविंग के बाजू में यहाँ पर L शेप में आपका आ जाएगा डाइनिंग एरिया. Now the best part is because that the TV units is going to be over there on that particular wall, because all the connections are provided there. तो आपके डाइनिंग से आपको मिलेगा direct access for your TV room also, so that even when you are eating food, you do not have to miss out on your favorite sitcoms. Let's come over here and take a look at the kitchen. Now the kitchen comes with this L-shaped granite slab right over here that ends at your vegetable sink, and also there is a window in the kitchen which also is connected to your dry balcony. Let's go and take a look at your dry balcony as well. Now your dry balcony comes with anti-skid tiles and it is a pretty spacious one. Now let's move towards the first bedroom of the house. और इस aisle से होते हुए हम आ गए आपके kids bedroom में. मैं किड्स बेडरूम के बाहर कैसे पहुंच गई? ओह, ये मैं आपको बताने ही वाली हूँ, पर ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, रिमेंबर. लेकिन तब तक आप इस विंडो को देख लीजिए, क्योंकि ये आधी यहाँ पे टफन्ड ग्लास के साथ है और आधी यहाँ पर स्लाइडिंग है, जिसमें आपको मिल जाएगा एक प्री फिटेड मस्कीटो नेट भी. एंड राइट ऑपोजिट द किड्स बेडरूम इज द कॉमन टॉयलेट एंड वॉश. लेट्स टेक अ क्विक लुक एट दिस वन ऑल्सो. Now your common washroom comes with anti-skid tiles, wall-to-wall vitrified tiles, and the CP sanitary fittings are going to be of Jaguar or similar. Now let's proceed towards the master bedroom. And right over here, I am in the master bedroom. Before I tell you more, सबसे पहले आप tiles देख लीजिए. यहाँ पर tiles मिल जाएंगे आपको wooden finished के. साथ ही साथ in your master bedroom is the attached toilet and wash, which also comes with anti-skid tiles and a wash basin fitted inside, and also CP sanitary fittings. Now this over here is the balcony door, which opens in a sliding pattern, comes with a mosquito net, and also we have to come outside and see more and explore more. Now do you remember the part I told you 1140 square feet? ये था घर 828 square feet का. बचा हुआ है आपका ये deck area. You saw me coming out of the window in the kids bedroom. I'm going to show you the whole balcony now. Come outside and see it. This is your garden area.
Until here there are tiles, and here is your garden that comes with this iron railing, and it is covered from 3 sides so that you get ample security from rains also. Obviously this property is located amidst the hills, so it's going to be really windy over here. And यहाँ से हम चलते हुए आएंगे into your complete deck area. So भले ही आपके किड्स बेडरूम को दी हुई है सिर्फ एक विंडो, पर बालकनी की और गार्डन की एक्सेस भी है. और यहाँ से हम आ जाते हैं आपके main deck area में. Now this can be a party place. In fact, you can host a small birthday party also over here because it is so spacious and there are no dead ends or dead corners to it which cannot be utilized. Let's come inside. And इसी के साथ साथ आपका जो गार्डन एरिया जो इन लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन दिया हुआ है ना, ये इट एंड्स ओवर हियर विद द एंटी स्किड टाइल्स. यहाँ पे आपका गार्डन आ जाता है और उसी के साथ यहाँ पे एक बीम दिया हुआ है so that these two areas can be separated. Now you can already see such a big balcony. और दोबारा एक बार लिविंग रूम में जाके मैं आपको इसका एक्सेस दिखा देती हूँ. यहाँ पर हम आ गए हैं आपके लिविंग एरिया में. So now these homes are already so windy, so well lit, and still they are actually not an apartment. This is an outdoor place, I'm gonna call it. It's more like a camping place because it's so beautiful and so open. So now I'm sure you want to know इतना सब कुछ amazing है, तो यहाँ पर आप आएंगे कैसे? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे I'm sure you want to do a site visit and you want to come over here. So quickly go to the next part of this video so that I can tell you how you can come over here, and I'm going to see you here very soon. Let's go and see how can you do that. आता तुम्ही ऑलरेडी हा प्रोजेक्ट बघितलाय, तर आय एम शुअर तुमच्या मनात जो प्रश्न आहे की आता ह्याच्या पुढे काय, तर बुकिंग प्रोसेससाठी खूप सिंपल आहे. खाली कॅप्शन्समध्ये एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकवर तुम्ही करायचं आहे क्लिक, आणि त्यानंतर आम्ही तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करणार आणि आम्ही तुम्हाला पुढची प्रोसेस सुद्धा सांगणार, ऑफर्स आणि डिस्काउंट्स बद्दल सांगणार, आणि त्यानंतर आम्ही तुम्हाला बुकिंग प्रोसेससाठी पूर्णपणे गाईड करणार फिजिकल साईट विजिट्स बरोबर. आता हे फक्त पुण्यातलंच नाही तर ऑल ओव्हर द वर्ल्ड, म्हणजेच भारतातले भरपूर शहर आणि बाहेरचे सुद्धा लाईक UAE, कॅनडा, सिंगापूर, USA, इथे सुद्धा जर तुम्हाला प्रोजेक्ट्स घ्यायचे असतील तर प्रॉपर्टी क्लाउडलाच कॉन्टॅक्ट करावं लागेल तुम्हाला. अजून प्रोजेक्ट्स बघायचे सिम्पल, लवकरात लवकर आमच्या चॅनलला करा सबस्क्राईब, म्हणजे कुठलाही प्रोजेक्ट तुमच्या शहरातला किंवा बाहेर जर तुम्हाला घ्यायचं असेल तर सगळं काही तुम्हाला मिळणार एकाच छताखाली, म्हणजेच इथे प्रॉपर्टी क्लाउडवर. सबस्क्राईब करा आणि लवकरात लवकर त्या लिंकवर सुद्धा क्लिक करा, म्हणजे रेजिस्टर पण व्हाल. भेटूयात आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.